బిగ్ బాస్ తర్వాత ఇది నా ఫస్ట్ పెద్ద రిలీజ్. నేను ఈ రిలీజ్ కోసం ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 years నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. మయాంక్ చెప్పినట్టు ఆ గ్రాఫ్ పైకి వెళ్తుంది, కిందికి వెళ్తుంది, మాలో టెన్షన్ పెరుగుతుంది. ఆ సినిమా ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు సినిమా థియేటర్లో రాబోతుందని చాలా టెన్షన్ ఉండే. ఫైనలీ ద మూవీస్ గెటింగ్ రిలీజ్ ఆన్ ద 2nd of April. ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి ఆ ఒక ఫ్రైడే కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు, ఫర్ దట్ ఫ్రైడే ఇన్ హిస్ లైఫ్. ఐ హోప్ దట్ April 2nd is that Friday in my life which will take me to another level. And I would end by thanking Nag sir for giving me this movie, Solomon sir for agreeing it, and Niranjan sir, Anvesh sir, and Pasha sir. Thank you. Thank you. Thank you so much for inviting me and giving me the opportunity. It's a very long list of people I want to thank, and I promise I'm going to keep it short. So, very first, as you know, they say that there are times when our life is not as beautiful as our dreams. It's actually way more beautiful than that. I'm actually experiencing that right now. It's been the same feeling since the day I got roped in for this film, and I just wanted to thank Anvesh sir, I just wanted to thank Solomon sir for making me a part of this amazing journey and blessing me with the opportunity of sharing the screen space with the legendary Nagarjun sir. I have learned so much from him. His energy was absolutely infectious. I still feel it, and all I want to say is every one of us, we've put in our blood, sweat and tears into this, because we know it's a saga of people who are the unsung heroes, and their story needs to be told. And here's what we are doing. And I would request all of you to watch Wild Dog, releasing on 2nd of April, only in cinemas close to you. Thank you so much. Thank you, and all the best to you, Prakash. Mayank, choose the language before. मैं हिंदी में ही बोल लूँगा, ठीक है. तो नमस्कार सबको. तो आप लोगों ने कभी वो देखा, एक हेल्दी पर्सन का ECG ग्राफ होता है. ECG में लाइंस होती है, ऐसे ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है. अगर वो स्ट्रेट लाइन है मतलब डेड है. मेरे लिए ये फिल्म जो है वो ECG ग्राफ है, एक फॉर अ हेल्दी पर्सन. क्योंकि ये मूवी मिलने से पहले मेरा करियर थोड़ा ऊपर नीचे था. मूवी मिली, लाइन ऐसे ऊपर गई. जैसे ही सोलोमन सर ने बोला कि आपको एक्शन करना है, इसमें सीखना है, 12 kgs कम करना है, इंजुरीज आते गई ECG ग्राफ नीचे जाता गया. फिर दिखा मेरा कि वेट कम हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ, तो फिर ऊपर आते गया ECG ग्राफ. उसके बाद फर्स्ट डे शूट नाग सर से मिला तो ECG ग्राफ यहाँ चला गया एकदम. उसके बाद पता चला कि कोविड आ गया, ECG ग्राफ नीचे जाता गया. डिप्रेशन आता गया माइंड में, पता नहीं. फिर बहुत सारे थॉट्स आए कि मूवी वापस शुरू होगी नहीं, ख़त्म होगी नहीं. अचानक से प्रोडक्शन से कॉल आया कि मूवी वापस शुरू होने वाली. ECG ग्राफ एकदम ऊपर चला गया. उसके बाद मनाली में 1 महीना जब श्याम सर से मिला, वहाँ पे जो सीखने को मिला और जो एनर्जी उनकी देखी, तो ECG ग्राफ यहाँ चला गया. उसके बाद जब ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर्स के रिस्पॉन्स से ECG ग्राफ पेपर के ऊपर चला गया. अब आई जस्ट विश कि 2 अप्रैल को आप सब लोगों की वजह से और आप सबके कंट्रीब्यूशन से ऐसा बम फटेगा कि फट के हाथ में आ जाएगी. एंड ये मेरा एक वाइल्ड डॉग का एक्सपीरियंस था. थैंक यू सो मच. 2 अप्रैल को थिएटर में आपके आसपास. थैंक यू.